Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, मार्केट मंत्र में आपका करजोर अभिनंदन। वेलकम सिद्धार्थ। गुड इवनिंग। चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। Benchmark domestic indices end on bearish note. Sensex plunges 780 points. Nifty settles at 25,877. Most Asian stock markets close with losses. And global crude oil prices rise over 1%. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स 780 अंक गिरा, निफ्टी 25,877 पर बंद। अधिकांश एशियाई शेयर बाजार नुकसान के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 1% से अधिक बढ़ीं। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. श्रोताओं, आइए रुख करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे सत्र में गिरावट दर्ज करके लगभग 1% नीचे बंद हुए। दोनों सूचकांकों ने दिन की शुरुआत घाटे के साथ की और सत्र के दौरान भी दबाव में रहे। सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 264 अंक गिरकर 25,877 पर आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांक भी घाटे में रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही सूचकांकों में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, extended their decline for a fourth straight session, ending about 1% lower. Both indices opened on a weak note and remained under pressure throughout the trading session. The Sensex plunged 780 points to close at 84,181, while the Nifty shed 264 points to settle at 25,877. The broader market at the Bombay Stock Exchange also underperformed. The mid-cap index as well as the small-cap index both tumbled almost 2%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक घाटे में रही कंपनियों में सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो 3.3% से अधिक, टेक महिंद्रा 2.9% से अधिक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर भी 2.7% से अधिक गिरे। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में सबसे पहले एटर्नल 0.9%, आईसीआईसीआई बैंक लगभग 0.5% और बजाज फाइनेंस के शेयर भी 0.3% बढ़े। Among the sectoral indices of the BSE, all 22 sectors edged lower. Among the key decliners, metal dropped over 3.3%, oil and gas shed more than 3.1%, and power lost upwards of 2.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,158 declined, 1,038 companies advanced, and 170 remained unchanged. और श्रोताओं, अब बात रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 14 पैसे कमजोर होकर 90 रुपए 2 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.75 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी बाजार पर कि लगातार 4 दिनों से हम मंदी देख रहे हैं।
तो ऐसा क्यों? क्या कोई संकेत, वैश्विक संकेत इसका प्रमुख कारण है, या एफआईआई की निकासी इसका प्रमुख कारण है? क्या कुछ ऐसे कारण हैं जो आप मतलब हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए प्राची, आप ये देखें कि ये तो जो बात आपने कही कि लगातार चौथे दिन गिरावट रही, और आज की गिरावट ऐसे समय पे आ रही जब कल जो हमारा घरेलू जीडीपी का जो एस्टिमेट आया वो ये आया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था इस कारोबारी साल में तक 7% के ऊपर 7.3% रहने वाली है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार आज चौथा दिन था जब हमारी बाजार में गिरावट है, जो और बात आपने बिल्कुल खुद ही अपने सवाल में उसका जवाब भी दिया कि बिल्कुल जो वैश्विक संकेत हैं, जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, और वो मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा हमारी बाजार पे जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है, या इट इज़ वेइंग heavily on Indian markets. That is the single most reason. Obviously, बाकी जो कारण आपने बोला कि उसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम दिसंबर का ही महीना देखें तो दिसंबर में भी अक्रॉस जो मैंने डेटा देखा है, अक्रॉस 18 सेक्टर्स उन्होंने तकरीबन 25,000 करोड़ की बिकवाली की है। तो अभी बिल्कुल वो भी एक वो है रीज़न है, बट सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, और वो लगातार बढ़ रही है। जी, आपने जियोपॉलिटिकल अनसर्टिनिटी की बात की, तो अभी हाल ही में अमेरिका ने 67 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से खुद को बाहर कर लिया है। नहीं प्राची, तो तो यही सब तो अनसर्टिनिटी बढ़ रही है। जैसा अभी जो आपने देखा अमेरिका में वेनेजुएला में जो कदम उठाया, और अभी क्या ये कोई ऐसा संकेत है जिस पर हमें गौर करना चाहिए? बिल्कुल है। और अब क्या है कि आप ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अब पहले हम देखते थे कि यूनाइटेड नेशंस की भूमिका होती थी, कभी ऐसी स्थितियां आती थी जहां दो देशों के बीच में कोई मतभेद हैं तो यूनाइटेड नेशंस, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती थी, इनका एक अहम भूमिका होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से कदम उठा रहा है, जिस तरह से उन्होंने जो वेनेजुएला में किया, और जो वो कह रहे हैं उनके राष्ट्रपति की अब हम चलाएंगे आने वाले दिनों में उस देश को, या वहां से जो भी तेल निकलेगा वो हम डिसाइड करेंगे या हम अपने पास लेके आएंगे, और उसके बाद क्या करना है उसका फैसला वो करेंगे। और ये अभी एक तरफा कार्रवाई है मेरे हिसाब से। अभी वहां पे स्टेक्स, चीन का बहुत बड़ा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वहां पे, और स्टेक बहुत हाई है। तो चीन क्या करता है, रशिया क्या करता है, क्यूबा, रशिया also has a lot of stake there. Absolutely, Rajesh. And already US has telling Venezuela authorities to throw out the advisors from Russia, Cuba, Iran and China. So now what needs to be seen, and also if I was reading a story that the Chinese oil companies have sought are seeking advice of their own Chinese government on how to go about what should be their next step in Venezuela. So plus when we don't stop at Venezuela, we already have Russia, Ukraine going on. We are seeing upheaval in Iran. We are also seeing not the best of relations between China and Japan. So lot of things happening. And our own neighborhood, we have Bangladesh, is another uncertain territory. So all this uncertainty, obviously, it is, I think, what we are close, or we are looking at a new world order, a reset of all this what we have been living for so long. क्या अगर हम अभी की बात करें तो आप क्या इसको ये मानेंगे कि ये वैश्विक अराजकता एनार्की की तरफ बढ़ रही है? नहीं, ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि एनार्की है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अनिश्चितता बहुत नए तरह की है। ये इस तरह की चीजें हमने देखी नहीं है। जैसा कि आज ही हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रंप साहब ने अभी तक तो हमारे ऊपर 50% का जो है टैरिफ लगाया, लेकिन अब वहां उनके यहाँ जो एक सेनेटर एक जो बिल लेके आ रहे हैं उन्होंने भी जिसका समर्थन किया है, उसमें यहाँ तक जो भी 500 जी बिल्कुल, एज यू राइटली सेड राजेश, 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज हु बाय रशियन ऑयल. सो थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन एंड एवरी कंट्री would have to look to safeguard its own interests. So I don't know in this scenario what happens. The entire concept of multilateralism is under question. Okay, if volatility, as we are discussing, stays elevated into the budget and earning seasons, what 2 or 3 concrete portfolio actions should a long-term investor in India consider over the next 2 or 3 months? What should he do?
See, Rajesh, one of the best things is that since the time Donald Trump has taken over as president of US, we have seen consistently foreign institutional investors exiting Indian market. We have seen consistently uncertainty increasing on a day-to-day basis. So, but what has happened in our markets? What has been the strategy of Indian investors? If you look for last calendar year, if you could look at, I think FII is sold to the tune of about upwards of 1.5 lakh crores. But at the same time, what was the strategy of Indian domestic institutional investors as well as including the retail investors? We bought to the tune of about 5 lakh crores. So I think the strategy is going to be, you have to be careful, don't panic, and Indian markets have not panicked. Despite huge tariffs, huge uncertainty, obviously we have seen bouts of fall, but we haven't seen that panic reaction to these kind of news which are emanating from across the world, because our own macroeconomic fundamentals are very strong. Yes, we will be impacted, there is no doubt about that, but we need to be very patient. And any long-term investor, as you said, you need to remain invested and obviously look at opportunities which come when markets react, these kind of falls come in. You will also get opportunities to put in money in good stocks. So also today it was noticed that the DII is also turned a bit cautious. All this while we were banking on them and we were saying the FIIs are kind of moving away. No worries because we have DIIs with us. So how do you see their behavior considering the Q3 earnings seasons and key US macro data? They're preferring to lock in profits after a strong prior run rather than add fresh risks. See, as far as domestic institutional investors are concerned, obviously I think people from the system, as far as SIPs are concerned, I don't think people are going to immediately start, that route is going to dry up immediately. Obviously, if we look at these kind of market scenario where things are so uncertain and still things are yet to pan out. I think Venezuela is still, nothing has happened. I think we'll see a lot of uncertainties coming from there post-Venezuela. So, as even you and me would be cautious on a day like this. So I think that also would be a reason why people are staying away. You would wait for, you would think even tomorrow, let's wait for tomorrow. You could buy probably at better levels. So that could be there in short term. We could see that, but overall, I don't see domestic institutional investors staying away from Indian market for a long time. So what should the governments be doing to build the confidence of the investors? See, what more can our government do? We have already, I think our macroeconomic fundamentals, as the RBI governor said sometime back, Goldilocks period, we have currently we are into a high growth, low inflation. We have excellent agriculture forecast. Even for the Rabi, the sowing has been good. You look at your forex reserves. And even the earnings season, the third quarter was supposedly looking good. Plus you have and we being the biggest importers of crude oil prices still continue to be at levels which are good for us, which we can sustain. We have good forex reserves. So as far as government doing, and government, I think from on its side, last 6 months you see GST rationalization, implementation of labor codes. So what else any government can do? What more can so I think this government on their side have been day after day taking very proactive action. Even the central bank cutting rates by 125 basis points. So yes, but you can't control anything which is outside of India. And see, currently the impact the entire negativity which is falling on us is all because of external factors. Okay, so we'll carry on. सिद्धार्थ जी, इस बीच हमारा जब कॉलर शो होता है तो हमें बहुत सारे श्रोताओं ने अपने संदेश में ये पूछा, उस वक्त भी बहुतों के हम जवाब नहीं दे पाए, जिसके लिए हम अभी भी क्षमा प्रार्थी हैं, कि इस तरीके से जब मार्केट अभी लो पे चल रही है तो घबराहट होने लग जाती है कि हमारा पैसा कैसे जाएगा, क्या करना है उसके साथ में। तो बहुतों ने ये सुझाव मांगा कि हम अपना पैसा निकाल लें या रखे रहें या क्या करें। तो इस पर आपका क्या सुझाव है? नहीं, देखिए प्राची, अगर आप मुझसे पूछिएगा, अगर मैं अपने को इन्वेस्टर रख के आपको ये जवाब दूंगा, अपने को उस जगह पे रख के जिसका भी वो सवाल है, जिन भी लोगों का, मैं कहूंगा कि मैं आज भी मैं ऐसे मौके तलाशूंगा
बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है. हमारे पास कोई भी नेगेटिव रीजन नहीं है एक्सेप्ट कि जो बाहर से अनिश्चितता आ रही है. तो भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास रखें. कोई और ऐसे ये मौकों का फायदा उठाएं. मैं तो उल्टा बोलूंगा कि ऐसे मौकों का फायदा उठाएं और ऐसी स्टॉक्स, शेयर्स अपने किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लें और उनमें पैसे लगाएं और थोड़ा लंबे समय के लिए लगाएं. हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो हो सकता है कि आप जो पैसा आज डालें भी, हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा उसमें आपको नुकसान भी हो. लेकिन अगर आज आप पैसा लगाएंगे तो मुझे लगता है अगर 2-3 साल, 4 साल की अवधि रखते हैं, मुझे लगता है 3 साल की भी अवधि रखते हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के निकलेंगे इस बाजार से. So you very rightly said, Siddharth, that it is all due to external factors that we are experiencing what we are experiencing today, and that we need to be resilient and we need to not panic and have faith in what we are doing. It is just one-off, perhaps, event that is taking place, and we will, as long as we are standing firm as a country, we can face any adversity. I'll just add a line, Rajesh, taking from you the word resilient. We as investors also need to be resilient as our economy is. Yeah. जी बिल्कुल. रुक करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. एशिया के प्रमुख शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. जापान का निकेई सूचकांक 1.6% से अधिक, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 1.2%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक लगभग 0.2% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.1% नीचे गिरा. वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कॉस्पी सूचकांक में मामूली बढ़त दर्ज की गई. बात अगर यूरोप की करें तो यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में आज का रुख मिला जुला देखने को मिला. लंदन का फुट्सी 0.2% और फ्रांस का कैक 0.1% नीचे गिरा. वहीं जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% ऊपर नजर आया. Wall Street ended on a mixed note yesterday. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average slipped over 0.9% and the S&P 500 dipped more than 0.3%. Conversely, the Nasdaq Composite Index rose almost 0.2%. Losses in the Dow and S&P 500 came after both indices touched intraday record highs earlier in the session. Meanwhile, in a social media post, US President Donald Trump said his administration is moving to ban Wall Street firms from buying up single-family homes in an effort to bring down housing prices. Shares of housing acquisition companies fell sharply following the announcement. On the economic front, the number of job openings was little changed at 7.1 million in November, but it was down by 885,000 over the year, according to the US Bureau of Labor Statistics. Now, this new move of the President Trump to ban Wall Street firms from buying up single-family homes is a fresh move now to make sure that the housing prices do not go up. How effective it's going to be? Again, Rajesh, I think something which I think people wouldn't have expected from. So in all unexpected steps being taken by Donald Trump, and what impact it has, I think we'll come to see in days to come. And obviously because the expectation is, as we heard from the Fed chair when at the last meeting, the last Fed meeting, that he has to tread a very cautious path in terms of still there are no clear indicators in terms of how inflation would pan out, and employment situation is still not that great as they would like it to. Obviously it has shown some improvement. So I think all this again adds to some bit of uncertainty as far as US economy is concerned, but also there is a lot of pressure because we'll have a new Fed chair coming in and Trump has been pushing for further rate cuts. So I think it all depends how the US economy also pans out post all this uncertainty, the high tariff they have imposed and the kind of commitments they have taken from people with whom they are entering into trade agreements of investments. So I think it's still time to see the impact, but obviously he's there to create uncertainty, and what he's claiming is obviously he's doing everything to make America great again. So let's see and wait. We need to wait. Okay. Moving on, India's economic growth is expected to outpace the National Statistical Office's first advance estimate, reflecting buoyant high-frequency data since September 2025, led by policy impetus.
A report from Morgan Stanley estimated real GDP growth at 7.6% year-on-year for financial year 2026, above the NSO's first advanced estimate, which pegged real GDP growth at 7.4% year-on-year. The combined push from fiscal and monetary policy support, improved purchasing power and labour market output are likely to ensure consumption recovery gains more breadth. Speaking exclusively to Akashvani, economic analyst Shubhamoy Bhattacharjee highlighted that the strong GDP performance reflects sustained domestic demand of the economy. Well, the GDP figures as advanced estimates of how the GDP would look in the year 25-26 is very heartening. At 7.4%, it is definitely far above the initial estimate of 6.4% for the year. Why is this looking good? Primarily because the investment climate in the country has picked up. Private consumption, which was wobbling a bit, has also looking fairly stable. The services sector has actually done very well. Now, that has covered up for the supposed weakness of the agriculture sector, but the agriculture sector has shown weaker growth simply because it comes on top of a high base. So that is not actually a weaker growth. Overall, it does show that in a very challenging global environment, the Indian economy is actually doing rather well, and this should help it to weather the storm in 26-27. So all in all, it's a good platform for Finance Minister Nirmala Sitharaman to present a budget that should be forward-looking. Also speaking exclusively to Akashvani, journalist Maithili Bhushnurmut underlined India's GDP growth is highest amongst major developing countries. India's first advanced estimates, GDP estimates that were released by the NSO on Wednesday show a very robust, resilient economy. The estimate is that this fiscal year, India will grow by 7.4%. That is amongst the highest major developing countries. In fact, and another boost to the government, Morgan Stanley has estimated that even this might be overshot and India might end up with a growth of 7.6% this fiscal, buoyed by supportive fiscal as well as monetary policies. Added to that, tax buoyancy also looks good, consumption looks good. The only uncertainty at the moment is come the external front. Domestically, all the signs are good. So this is a very positive thing going for the government going into the budget. Former Cabinet Secretary and member Niti Aayog Rajiv Gauba has said that the Pragati has brought about a new momentum to infrastructure project execution in the country. In an exclusive interview with the Akashvani News, he said that technology is at the core of Prime Minister Narendra Modi's vision for Viksit Bharat at 2047. A portal was created called the Project Management Portal, and all infrastructure projects across ministries which are above a certain value, 500 crores, are listed on it. Their date of sanction, the estimated cost, implementing ministry, various intermediate milestones, and the issues which may be holding them up. And some 25 to 30 projects are picked up every month for review by the Prime Minister himself. And all the chief secretaries of all states are present, all secretaries of Government of India, all ministries, they are present, and issues get resolved. So that is the importance of Pragati. Catch the full interview tonight at 9:30 p.m. on 100.1 Akashvani FM Gold and additional frequencies. सिद्धार्थ जी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो ये तो सकारात्मक संकेत समझ आ रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा जो प्राची प्रगति का ये जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप जो प्रगति के नाम से प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में चलाया जाता है, इसकी तकरीबन 50 मीटिंग हो चुकी हैं। और जैसा कि उन्होंने अभी राजीव गौबा जी ने बोला भी कि इसमें तकरीबन जो 500 करोड़ के ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें जब भी कहीं रुकावट आती है उनके डिफरेंट लेवल्स हैं। और लास्ट लेवल है जब प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये जो है जो भी रुकावटें होती हैं इनका सोल्यूशन निकाला जाता है। और एक अगर उदाहरण दूं तो तकरीबन पिछले 10 साल में 86 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस प्रगति के नीचे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं जिनकी मॉनिटरिंग हुई। और अगर एक उदाहरण दूं तो आपको जो रेलवे लाइन है उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन, वो अगर प्रगति में मॉनिटर ना होती तो अभी वो बनने में वो तकरीबन बनती 2040 के आसपास जाके। तो आप ये एक अंदाजा। दूसरा, आपको अगर मैं उदाहरण दूं प्रगति का जो रिजल्ट, जितने तेजी से रिजल्ट आते हैं
प्रगति में चूंकि मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री खुद करते हैं, तो एक नवी मुंबई एयरपोर्ट ऐसा अनुमान है कि अगर उसको भी इसके नीचे मॉनिटर ना किया जाता तो इसका भी जो क्रियान्वयन है वो तकरीबन हम 2050 के आसपास देखते। और सबसे जी going back to the National Statistical Office first advanced estimate, India is increasingly being described as a bright spot in a world grappling with, you also mentioned a while back, with slow growth, persistent inflation and geopolitical uncertainty. At the same time, there are real questions about how resilient this moment is for India and what it will take to sustain high growth all the way to 2047. So, the figures that Morgan Stanley has also put forth, 7.6%, is in sync with the NSO's advance estimate, and it augurs well for India. Yes, obviously, Rajesh, and what you said that what needs to be done, obviously the external uncertainty I think needs to stop as soon as possible. Plus, I think the path which government has taken of unleashing reforms, taking steps to get investments into the country, in maintaining low inflation and the kind of capital expenditures we have done over last post-COVID especially, I think these are the steps, and I'm sure government would be announcing pro-investment, pro-growth steps also in the coming budget. जी, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर इंडियन एआई स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। भारत में अगले महीने होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 से पहले सभी के लिए एआई ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज में क्वालिफाई करने वाले 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स इस बैठक में शामिल हुए। ये स्टार्टअप भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल ई कॉमर्स के लिए जेनरेटिव एआई के उपयोग से 3D कंटेंट निर्माण, विपणन और व्यक्तिगत सामग्री निर्माण, इंजीनियरिंग सिमुलेशन, स्वास्थ्य देखभाल, निदान और चिकित्सा अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। Global crude oil prices rose today after 2 days of declines. Investors assessed Venezuela's developments and reports on progress of proposed U.S. sanctions legislation against countries doing business with Russia. Brent crude was trading over 1.2% up at $56 and 76 cents per barrel, and WTI crude was trading 1.4% higher at $60 and 71 cents per barrel when reports last came in. Siddharth would like to know very briefly from you, how will oil be behaving and which mode will it take now? Which demographic will it take coming to India? See, Rajesh, despite so much of international upheaval, uncertainty, oil has behaved well, I would say, till now. And if I would say also, if as US is claiming that they'll be able to get ship out more oil from Venezuela, I think there is also a feeling that oil may fall further because the global growth continues to be weak. So it could also even go down to the levels of $50 per barrel, and which is very good for us. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading around 0.9% down at 1,37,290 rupees per 10 grams. Silver was also trading over 4.1% down at 2,41,410 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध वाला सोना लगभग 0.8% गिरकर 1,36,855 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 3.6% से अधिक गिरकर 2,41,455 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। Siddharth, thank you so much for being with us and answering all our queries related to business, economy and stock market. Thank you so much. Thanks. धन्यवाद सिद्धार्थ। And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices end on bearish note. Sensex plunges 780 points. Nifty settles at 25,877. Most Asian stock markets close with losses and global crude oil prices rise over 1%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Monday.